Hello guys, welcome to the JavaScript tutorial. Today we will discuss about hoisting. So before the hoisting, we should know about execution context. Execution context means when the JavaScript engine executes a script file for the first time, it creates the global execution context. So the execution context has two phases. One is creation phase, another is execution phase. So during the creation phase, we allocates memory for the variable and the functions. And for the creation phase, JavaScript engine will read the file one by one. Hosting means basically it's virtually moving up the variable or function declaration to the top of the scope. तो इसको हम लोग कैसे समझे, राइट? So for that we need to understand with the examples. Hostings are two types. There is variable hosting and there is a function hosting. The variable hosting means JavaScript engines moves the variable declaration to the top of the script. Okay. If I have declared the var name equals to Rohit, and if I am trying to access that name before that, then it is giving me undefined. Why? So what is the reason? uh, like you maybe think I'm trying to access that variable before its declaration, then how can it's giving undefined? It should give some error, right? But hosting is not like that. Hosting means it already hosted the or the moves, or it already moved up the variable declaration to top of the script. इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब हम लोग इसको, तो जावास्क्रिप्ट इंजन जब इसको रन करते हैं वन बाय वन, तब क्या करते हैं? बेसिकली ड्यूरिंग द क्रिएशन फेज, जावास्क्रिप्ट इंजन प्लेसेस द वेरिएबल्स टू द टॉप एंड क्रिएट्स द मेमोरी फॉर दोज वेरिएबल्स. मतलब क्या हो गया? ऐसे हो जाएगा भाई, वेरिएबल नेम दिस, देन द कंसोल लॉग दिस, देन दिस नेम इक्वल्स टू रोहित. तो जावास्क्रिप्ट इंजन इसको होस्ट कर दिया, वेरिएबल डिक्लेरेशन को ऊपर में भेज दिया, देन दिस कंसोल लॉग केम. ठीक है, देन द var नेम, देन सो ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन फेज इट विल स्टोर द वैल्यू टू द वेरिएबल. सो अभी क्या हो गया? जो रोहित है इस नेम पे स्टोर हो गया है. सो दिस इज फॉर द वेरिएबल डिक्लेरेशन. हम लोग लिखते ऐसे है, बट क्या होता है बेसिकली जावास्क्रिप्ट इंजन वर्चुअली इसको ऐसे देखते हैं. इट विल मूव अप द वेरिएबल टू द टॉप ऑफ द स्कोप. तो इसको इसलिए ऊपर में भेज दिया, var नेम को ऊपर में भेज दिया. देन आई एम ट्राइंग टू प्रिंट द नेम, देन इट्स बेसिकली असाइनिंग द वैल्यू. इफ वी डिक्लेयर द फंक्शन, so JavaScript engine, it moves the function declaration to the top of the scope. एग्जाम्पल ले लेते, ठीक. ऐड ठीक है. अभी मैं इसको कॉल करूंगा ऊपर से, लाइक बिफोर द डिक्लेरेशन, एंड इसमें मैं रिजल्ट करके लिख रहा हूँ दिस, देन आई एम कंसोल द रिजल्ट. देखते क्या होता है. oh I have to give some value here, 2,3. see, it's giving me 5. So it means JavaScript engine hoisted up this function declaration to the top virtually. इसलिए हम लोग इसको पहले एक्सेस कर पा रहे हैं, राइट? मैं डिक्लेयर बाद में किया हूँ एंड आई एम ट्राइंग टू एक्सेस बिफोर दैट. सो द डिक्लेरेशन इज डन आफ्टर द accessing. So what does JavaScript engine behind the scene? During the creation phase, it will see, okay, this is the function. So then, like, what will happen? It will just create the memory for this add function or the function's reference to the heap. Okay. So later on, like whenever we'll just calling this function
and storing to the result, and we are printing it. But actually, the virtually what is happening, I'll show you. So virtually happening, so first it's going like this. The function declaration is happening. Add 1 comma b, then this, then this, then you're consoling it. Yeah. So this is happening. That's why I'm able to call the add function, because the declaration has done before itself through the hoisting concept. Now, if you'll try for the hoisting for function expression, then what will happen? Let's see. List print name equals to function. I'm just printing it. Console.log. Okay. Now, if I'll try to access it before the declaration, what will happen? Okay, let's see. See, it's throwing one error, reference error, cannot access print name before initialization. Because what happened? So this function has been stored into the variable that is name print name. During the creation phase, this variable has been stored in the memory. Execution phase will store some value to the variables. तो इसमें भी सेम चीज़ है. जब हम लोग प्रिंट नेम जो वेरिएबल है, सो वी स्टोर दैट प्रिंट नेम टू द हीप ड्यूरिंग द क्रिएशन फेज. बाद में जब ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन फेज ए फंक्शन इसमें स्टोर होता है. तो जब मैं इसको एक्सेस करता हूँ, तो इसको सो इट्स गिविंग द एरर, द रेफरेंस एरर. दैट्स व्हाई द होस्टिंग इज नॉट पॉसिबल फॉर दिस फंक्शन एक्सप्रेशन. नाउ विल ट्राई टू डू होस्टिंग फॉर लेट एंड कांस्टेंट. लेट्स सी. देखो इसमें भी we are getting the same error. The reference error cannot access name before initialization. इसका मतलब क्या होगा? जब var में हम लोग कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे थे, तो ड्यूरिंग द क्रिएशन फेज इट वाज स्टोरिंग द वेरिएबल एज ए अनडिफाइंड इन द मेमोरी, राइट. बट इसमें भी बहुत सारा दिक्कत आने लगा. कोई भी एप्लीकेशन में ऐसे अनडिफाइंड होस्टिंग के टाइम में हो जाएगा, देन इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट द एरर, जो कहाँ पे डेटा अनडिफाइन आ रहा है, क्या आ रहा है. तो इसको रिजॉल्व करने के लिए जावास्क्रिप्ट दे इंट्रोड्यूस लेट एंड कांस्टेंट लेटर ES5. So during the creation phase, name has been created, the name variable has been created in the heap memory, but there is no value has assigned to it. ठीक है. जब वैल्यू कोई असाइन नहीं होगा, तब ये बोलेगा ना भाई कैन नॉट एक्सेस नेम बिफोर द इनिशियलाइजेशन, क्योंकि इनिशियलाइजेशन हम लोग किए ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन फेज. सो दैट्स व्हाई द लेट विल गिव यू द रेस्ट्रिक्शन, डोंट यूज द वेरिएबल बिफोर द डिक्लेरेशन, यूज इट आफ्टर द डिक्लेरेशन. For constant also same thing. That is the actually hosting is very simple. होस्टिंग का मतलब ये हो गया, जब भाई हम लोग को कुछ ऊपर में लेके जाना है. होस्टिंग ए फ्लैग और होस्टिंग समथिंग, राइट. होस्टिंग और पुल करने का बा कुछ ऐसे ही. तो होस्टिंग का मतलब ये हो गया, जावास्क्रिप्ट इंजन वर्चुअली जो वेरिएबल डिक्लेरेशन होते हैं और फंक्शन डिक्लेरेशन होते हैं, ये दोनों को क्या करते हैं,
it just lifts up this thing to the top of the script. That's all. If you have guys still have doubt, please let me know. We can discuss further. Thank you for watching. Please subscribe. Thank you guys for watching the video. We will meet in the next session.